Welcome back to my YouTube channel Education for All. Today we are going to start our new lecture on Pakistan studies. मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको इंशाअल्लाह लेक्चर सीरीज़ को कंप्लीट करूंगा पाकिस्तान स्टडीज़ के ऊपर। तो आज चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल अयूब ख़ान का मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि फ़र्स्ट मार्शल लॉ था उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम सेकंड मार्शल लॉ को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कि एक बात जो मैंने पहले कही थी उसको याद रखिएगा कि मार्शल लॉ जब भी लगती है, जो भी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी कंट्री में आती है तो वो आती तब है जब उसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसको बुलाती है, क्योंकि अनस्टेबल ऑफ द political establishment, therefore they comes on the request of civilians. However, when we call them to go back for the general elections, for the democratic continuation, they'll never go upon the request of civilians. तो बात सारी ये है कि हर इस्टेब्लिशमेंट कोई भी हो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, वो अक्सर ऐसे होता है कि वो जब माशाल्लाह लग जाती है तो वो यही कहा जाता है कि ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान में यही कहा गया था कि अनस्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिनेरियो उस वजह से माशाल्लाह लगे। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट माशाल्लाह मैंने बताया था आपको, मैं रिकॉल कराता चलूँ कि फ़र्स्ट माशाल्लाह जना अयूब ख़ान ने नहीं लगाई थी, बल्कि फ़र्स्ट माशाल्लाह मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को लाने वाला जो शख्स था वो था प्रेसिडेंट आई सिकंदर मिर्ज़ा। तो उसके बाद जब वो माशाल्लाह लग गई तो आई सिकंदर मिर्ज़ा जो कि प्रेसिडेंट था, जो कि ख़ुद माशाल्लाह लाया था, वो ख़ुद उसको मुल्क बदर कर दिया गया। और करने वाला कौन था? वो करने वाला जना अयूब ख़ान था, जिसको आई सिकंदर मिर्ज़ा लाया। इस के लिए फ़र्दर अगर आप मेरी वीडियो मेरा वो लेक्चर सुनना चाहें तो आप लेक्चर नंबर 3 पर क्लिक करके उसको सुन सकते हैं। अब आते हैं सेकंड मार्शल लॉ पर। तो सेकंड मार्शल लॉ में हुआ ये था कि अंडर प्रेशर फ्रॉम द पीपल पार्टी, पाकिस्तान पीपल पार्टी नोन एज पीपीपी, थ्री पी अल्फ़ाबेट नोन एज पाकिस्तान People's Party, the representative of the general people of Pakistan. Public resentment and anger against his administration, Liaquat Ali Khan resigned from the presidency in poor health and handed over his authority to the army commander, a little known as personality and heavy alcoholic General Yahya Khan, who imposed martial law. तो यहाँ पर मैं थोड़ी बात क्लियर करता चलूँ कि जना याह्या खान को हैंड ओवर किया जना अयूब खान ने अपनी माशाल्लाह, यानी कि माशाल्लाह को फुली तौर पर सस्पेंड करके एक न्यू इलेक्शन नहीं कराए, बल्कि उसने एक न्यू सिविल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बल्कि एक मिलिट्री डिक्टेटर को हैंड ओवर कर दी मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हैंड ओवर कर दिया। एंड देन सेकंड मार्शल लॉ लग गई, यानी कि याह्या खान सेकंड मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। तो सक्सेसर भी एक मिलिट्री पर्सन था, प्रोड्यूसर भी एक मिलिट्री पर्सन था, सक्सेसर भी एक मिलिट्री पर्सन था। तो इट मीन्स कि अब भी स्टिल कोई सिविलियन गवर्नमेंट आने का या कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी का कोई चांस नहीं था। हालांकि आप अगर देखें तो जना अयूब खान के एरा को एक गोल्डन एरा तस्वर किया जाता है। उसके बावजूद उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अपने अख्ताम को पहुंची, क्योंकि वो एक तो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गया था सेहत के हवाले से, और आवाम का एतमाद उससे हट गया था, क्योंकि पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रेशर था जिसको वो बर्दाश्त न कर सका। लेकिन उसने एक ये काम किया कि फिर भी उसने एडमिनिस्ट्रेशन पीपल्स पार्टी के हवाले नहीं की, यानी कि एक सिविलियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं की, बल्कि उसने दोबारा से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ही कंटिन्यू किया। और जो उसके अंडर में जो एक न्यू आर्मी चीफ था उसको एज अ सेकंड चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया। Further, President Jana Ayub Khan was aware of the explosive political situation in the country. Support for progressive and socialist groups was rising, and calls for a change of regime were gaining momentum. In a television address to the nation, President Khan announced his intention to hold nationwide elections for
following year and to transfer power to the elected representatives. Virtually suspending the 1962 Constitution, President Khan instead issued the legal framework Order Number 1970, which caused radical changes in the West Pakistan, known as in the present Bangladesh, tightening the grip of no, not West Pakistan, but in the West Pakistan known as nowadays Pakistan, when it separated from East Pakistan, which is known as present day Bangladesh. So, tightening the grip of martial law, the one unit program was dissolved in West Pakistan, removing the West prefix from Pakistan and direct ballot replaced the principle of parity. Territorial changes were carried out in four of the country provinces, allowing them to retain their geographical structure as they were in 1947. The status of the parliament, Supreme Court, and major government and authoritarian institutions also retained their status. The decree was limited to West Pakistan. It had no effect on East Pakistan. Civilians in Ayub Khan's administration were dismissed by the military government, which replaced them with military officers. The election commission registered 24 political parties. So now it is time to election. तो अब हुआ ये कि जना अयूब खान का एरा उसमें उसने ये डिसाइड किया कि अब जो है इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन के लिए 24 पार्टी यानी कि 24 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर की गई और 5 लाख के करीब ईस्ट पाकिस्तान में लोग साइक्लोन की वजह से यानी कि उनका नुकसान जानी नुकसान हुआ और ऐसे अवामी लीग